Alright जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum participants. I'm sure that I'm audible and the screen is there. Please do confirm it so that we may proceed further accordingly. Okay, in today's session, we're going to talk about your favorite genre, your favorite writer. I'm sure up till now, आपने अपने फेवरेट राइटर को जो है वो ज़रूर ले लिया होगा और आपने अपने फेवरेट राइटर को न सिर्फ ले लिया होगा बल्कि आपने उनको जो है वो ढंग से प्रिपेयर भी कर लिया होगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन कि हम अपने फेवरेट राइटर जो हैं उनको एक दफ़ा यहाँ पे आपके फेवरेट राइटर्स को देख लें, डिस्कस कर रहे हैं एंड इन केस you need guidelines, in case you need some points where you need to go for the revision, तो हम आपको वो भी रिकमेंड कर सकें बिकॉज फेवरेट राइटर या फेवरेट जॉनरा एक ऐसा आपके पास स्टेप होता है जहाँ से आपके इंटरव्यू जो है वो मूव ऑन करता है या मूव बैक करता है। सो अ वेरी क्रूशियल स्टेप अ वेरी क्रूशियल स्टेप अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और आपको अपने इंटरव्यू के अंदर जो है whenever you are going to appear in front of the panel, तो आपका जो फेवरेट राइटर है until unless आपने उसको बड़े ढंग से प्रिपेयर किया हो, आप कॉन्फिडेंटली उस पर तभी बात कर सकते हैं if you have read that particular writer. इससे पहले कि हम जो हैं ये बात करें कि फेवरेट राइटर आपका क्या है, आपका फेवरेट जॉनरा क्या है, बिकॉज आई हैव रिक्वेस्टेड कि हम जो हैं 10 लोग जो हैं उनसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ये इनसाइट दें कि उन्होंने कौन सा फेवरेट जॉनरा या फेवरेट राइटर लिया और वो जिस सीक्वेंस से नाम है उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई उस सीक्वेंस के मुताबिक नहीं अपीयर हो सकेगा या वो हमारे साथ आज नहीं होंगे तो हम दोबारा शायद उन्हें ना सुन पाएँ। लेकिन उससे पहले जो है मैं ये बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप अपने फेवरेट राइटर को प्रिपेयर करते हैं तो कौन-सी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए एक सिंपल सी फिलॉसफी फेवरेट राइटर के पीछे ये चलती है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर फेवरेट राइटर तो ईज़ी राइटर्स को ना लीजिए या ईज़ी राइटर्स को ले लीजिए। हर एक की मुख्तलिफ फ़िलॉसफ़ी होती है। मेरे नज़दीक जो मुझे लगता है कि आपको जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो ये पॉइंट है, आप उन राइटर्स की तरफ जाइए जो आपको अपील करते हैं, जो आपको लिटरली अपील करते हैं। सो इन केस यू आर टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द राइटिंग्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, आप बाय फ़ोर्स जो है वो किसी राइटर को अपना फ़ेवरेट ना लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे इट मीन्स आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप इसलिए किसी भी फ़ेवरेट राइटर को अपना राइटर ना बनाइए कि क्योंकि एक्स, वाई, ज़ेड का भी यही फ़ेवरेट राइटर है, चूँकि पैनल जो है वो इसी के मुतालिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुझे इसी को अपना फ़ेवरेट राइटर लेना है। इसके अलावा आपने कोई ऐसा मुश्किल तरीन नाम भी नहीं ढूँढ लेना, जो आपके पैनल में आप बताएँ कि जी मैंने ये वाला फ़ेवरेट राइटर तैयार किया हुआ है, बट व्हेन द पैनल इज़ गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस अबाउट दैट, तो उसमें से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 1 या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 2 या दोनों ये कह दें कि चूँकि हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस राइटर। याद रखिए कि यू आर बाउंड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दोज़ पीपल जिनका काम आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। आप बाउंड हैं कि आप उनके बारे में बात कर सकें। सो फेवरेट राइटर के मुतालिक इतना मुश्किल नाम ले लेना कि जिनको आपके पैनल ने ना पढ़ रखा हो, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पढ़ रखा होता है, बट फिर भी कुछ चुन के लोग ऐसा नाम निकाल लेते हैं कि जिनको किसी ने ना पढ़ रखा हो, तो इट मीन्स कि वो फिर आपका फेवरेट राइटर ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो आप पे क्वेश्चंस इम्पोज़ करते हैं। मैं आपसे मिसाल के तौर पर हम जो हैं मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ टाइम एंड अगेन कि आप विलियम शेक्सपियर जो हैं इसको ना लीजिएगा। इसी तरह से जॉन कीट्स हैं, अगर हो सके तो अवॉइड कर लीजिएगा। इसी तरह से कुछ और जो कॉम्प्लिकेटेड से राइटर्स हैं जिस तरह से टी.एस. इलियट हैं, एज़रा पाउंड हैं। कॉम्प्लिकेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि ऐसे राइटर्स कि जिनकी पॉलिटिशियंस के साथ एफिलिएशंस हैं या जिनके मुतालिक जो है जैसे एज़रा पाउंड जो है
एज अ पॉइंट आप जानते हैं कि जब उसने कहा अमेरिका इज अ सेमी बार्बरस स्टेट, तो उसको जो है वो डिटेन कर लिया गया था। टी.एस. इलियट है, इन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया था। तो ऐसे राइटर्स लीजिए का कि जिनके मुतालिक हिस्ट्री जो है वो आपको और आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो सपोर्ट कर सके। हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है ले लेते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को अगर आप में से कोई तैयार करना चाहता है तो वो किस तरह से तैयार करेगा और क्यों अर्नेस्ट हेमिंगवे को उसको लेना चाहिए। देखिए, जब भी कोई आप फेवरेट राइटर प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले तो आपने उसकी कंट्री को देख लिया, उसकी नेशनैलिटी को देख लिया, वो अमेरिकन है, वो पोलैंड का है, वो ब्रिटिश है, उसकी कंट्री क्या है। फिर उसके बाद जो है आपने उसके प्रोफेशन को देखा कि क्या वो एक फुल टाइम राइटर था या वो सिर्फ जो है पार्ट टाइम राइटिंग करता था। अर्नेस्ट हेमिंगवे जिस तरह से जर्नलिस्ट भी था, स्टोरी राइटर भी था। सो उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स क्या थे। फिर तीसरे नंबर पे आप उसकी लाइफ की जो बेसिक सी लाइफ के मुतालिक जो चीजें हैं आप वो देख लीजिए, फैमिली का बैकग्राउंड देख लीजिए। हेमिंगवे जो है वो जब लिखा करता था फॉर एग्जांपल, तो कौन से ईयर्स ऐसे थे कि जिन ईयर्स के अंदर इसने मैक्सिमम काम किया। जो आपका फेवरेट राइटर हो सकता है, हम हेमिंगवे को जस्ट एक मॉडल के तौर पर ले रहे हैं और आपको ये अप्लाई करना है ये तमाम चीजें जब आपने अपने फेवरेट राइटर को तैयार करना है, ठीक है। देन आप जो हैं वो अपने राइटर की कुछ थ्योरीज, अगर उसने थ्योरीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिस तरह से अर्नेस्ट हेमिंगवे की आइसबर्ग थ्योरी है, अगर आपके राइटर की कोई थ्योरी है तो उसकी क्या कोई काउंटर थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई काउंटर थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके अलावा वो इस थ्योरी में जो बात कहता है, क्या ये सारी की सारी थ्योरीज आपके फिंगर टिप्स पे हैं। थ्योरीज के बाद आपको ये देखना है कि आपके राइटर के प्राइजेस जो हैं वो कितने हैं। So you need to check it that he is a Nobel Prize winner. He is the Nobel Prize winner or not. There are a lot many other prizes, but you need to remember these basic details. Number 6, you need to go for कि उसके जो नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो वर्क्स हैं, उसके अंदर दो तरह के देखिए शॉर्ट स्टोरीज हैं या वर्क्स हैं। किसी भी पर्सन के काम को जब आप पढ़ते हैं दो तरह से आप उसको देखते हैं। पहली तरह से आप उसको ये देखते हो कि इसका जो फेमस वर्क है वो कौन सा है। जिस तरह से आप फेमस वर्क की बात करते हो तो फेमस वर्क तकरीबन हर एक ने पढ़ रखा होता है। अब अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल्स अगर आप बात कर लें जिसपे से नोबेल प्राइज मिला था, नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, उसको हर एक ने पढ़ रखा। बल्कि दुनिया की तकरीबन 38 से 40 ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें वो शामिल है, उनके सिलेबस के अंदर शामिल है, ग्रेजुएशन के अंदर। आई डोंट नो अभी चूंकि ग्रेजुएशन के जो इससे पहले ग्रेजुएशन होती थी पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वो शामिल होता था, अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी। सो आपको ये देखना है उसके बाद वो क्या ट्रायलॉजी लिखता है और उसके जो वर्क्स हैं, इसको जो नोबेल प्राइज मिला या दूसरे प्राइजेस मिले, कितने प्राइजेस ऐसे थे जो उसको उसकी ड्यूरिंग लाइफ मिले और कितने प्राइजेस ऐसे हैं जो कि उसको पोस्ट ह्यूमसली मिले जब वो नहीं था। और अगर उसने नेशनैलिटी अपनी चेंज की थी तो उसकी वजह क्या थी, ठीक है। नोटेबल वर्क्स उसके जो हैं वो क्या थे। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप अगले स्टेप में देखने की कोशिश करेंगे उसके राइटिंग स्टाइल की, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जिस पे बात करनी है कि वो उसका स्टाइल कैसा था, राइटिंग स्टाइल। देखिए, राइटिंग स्टाइल के ऊपर जब भी आप बात करेंगे, आपको उसके जिस भी पर्सन की आप बात कर रहे हैं उसके वर्क से रेफरेंसेस को लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो हैं वो सिंपल सा ये कहें कि मुझे हेमिंगवे इसलिए अच्छा लगता है कि उसका राइटिंग स्टाइल दिस है। डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल दिस कोटेशन फ्रॉम द सन आल्सो राइजेस और दिस कोटेशन फ्रॉम फॉर whom द बेल tolls impressed me a lot। आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके मुतालिक जो है वो क्रिटिक्स क्या कहते हैं। सो आप अपने फेवरेट राइटर के मुतालिक जो हैं एटलीस्ट 2 से 3 क्रिटिक्स जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी जो है वो देख के जाएंगे। डेविड एशिस को देख लीजिए, एफ एवंस को देख लीजिए, विलियम जे लॉन्ग को देख लीजिए, टी सिंह को देख लीजिए, बियर मुल्क को देख लीजिए। आपको बड़ी आसानी से इसके ऊपर जो है वो काम मिल जाएगा। सो अब आपको ये समझने की जरूरत है इन तमाम चीजों को। प्लस नंबर 9 पे आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कुछ कोटेशंस उसके जो है वो, जो उसने कहा, जो आपको लगा कि क्यों आपका फेवरेट है, इसकी वजह क्या है। आपको डेफिनेटली इसको डिफेंड करना है। सो जब आप डिफेंडिंग पोजीशन में आएंगे तो फिर आपका जो है वो कोटेशंस का पता होना चाहिए। कोटेशंस के बाद अगले स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वर्क है इसका थीम कैसा है। देखिए, याद रखिए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि वो अपने आप को बिल्कुल वैक्यूम में ले जाए अचानक से। मिसाल के तौर पर अगर
मैं कोई पोएम लिखता हूँ या आप कोई पोएम लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पे हमारे माहौल का, सोसाइटी का बहुत असर होता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जब लिखता है तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिखने में हमें लव के थीम्स मिलते हैं, वॉर के थीम्स मिलते हैं, ट्रैवल मिलता है। हमें ये थीम्स मिलते हैं, जो लव का थीम जो है वो बहुत कॉमन है, वॉर का थीम जो है वो बहुत कॉमन है, और इसके अलावा ट्रैवल एंड लॉस के थीम्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। सो आपको ये भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि आप जिस राइटर को प्रिपेयर किया, उसके अंदर कौन से थीम्स कॉमन है। उसके पास जो हैं वो क्या, उसके अंदर जो थीम्स कॉमन है, उसके सारी की सारी जो पब्लिकेशंस हैं, जो सारी की सारी राइटिंग्स हैं, उनके अंदर ये थीम्स रिकरिंग थीम्स हैं, ये टाइम एंड अगेन आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको इस पे बात करना पड़ेगा। नंबर 11 पे आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो भी फेवरेट राइटर आपने तैयार किया, जिस तरह से हमारे पास एक एसटी कॉलेज 1772 में पैदा होता है, 1834 में चला जाता है, किताब लिखता है इट्स टू रिफ्लेक्शन। उसकी इस किताब ने, इट्स टू रिफ्लेक्शन ने बहुत लोगों को मुतासिर किया। इवन अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म के नाम से एक पूरी ठीक ठाक जो है वो मूवमेंट जो है एसटी कॉलेज की बुक से जो है वो शुरू हो गई, जो कि सॉर्ट ऑफ रोमांटिक लोगों की तरह इनकी ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। आपको ये देखने की जरूरत है कि जो इस राइटर को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है। अगर आप मिसाल के तौर पर अलेक्जेंडर पोप को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखने की जरूरत है कि वो किस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है। क्या वो अपनी कोई नई ट्रेडिशंस दे रहा है, या वो कुछ ऐसी लेगेसी दे रहा है जो कि इससे पहले किसी ने बात की थी, लेकिन वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ यकीनन आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के सारे वर्क को पढ़ सकें, बट मेरी रिकमेंडेशन ये हैं कि जब भी आप अपने फेवरेट जॉनरा को, फेवरेट राइटर को तैयार करें, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। जिस तरह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, जब मैंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बिकॉज़ मेरा फेवरेट है, तो मैंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे का शायद मैंने 3 से 4 बुक्स तो टेक्स्ट के साथ पढ़ी थी, लेकिन एडाप्टेशन जो हैं वो सारी देखी गई। अच्छा, सज्जाद साहब जो हैं वो हमेशा से क्लास की रौनक रहे हैं। ये बताने में कि आवाज़ क्लियर नहीं है। सज्जाद, वैसे आज तो ये मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ठीक है। तो सज्जाद के अलावा किसी और के साथ भी इश्यू है? Someone is facing the same issue. Is there any distortion in my voice? बस जल्दी बताइए ताकि हम जो है वो करें। नो, इट इज़ क्लियर। सज्जाद साहब, बस इससे देख लिया, पता चल गया ज़ूम को, ये फ़िरंगियों की बनाई हुई मौसलाती आलाकार जो है तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे साथ छोड़ जाती है, ठीक है? सो हमें इस फ़िरंगियों के आलाकार से समझने की ज़रूरत है। ये नहीं चाहते कि आप जो है वो आगे बढ़ें। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो नंबर 12 इज़, when you're talking about the writings, your chairman is going to ask you the question like how many novels or how many books of your favorite writer you have read so far. Remember one thing, अगरचे आपने किसी का भी टेक्स्ट नहीं पढ़ रखा, एंड डेफिनेटली, लेकिन आप कम से कम 1-2 बुक्स का नाम वो ज़रूर ले लीजिएगा कि आपने टेक्स्ट को पढ़ रखा है, किसी 1-2 किताब का, और उसमें से कुछ 4-5 कोटेशंस भी याद करके जाइएगा। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ सिंपली ये कह देंगे कि मैंने किसी बुक का टेक्स्ट नहीं पढ़ा, इवन अगर आपने अपने एमफिल में या एमए में नहीं भी पढ़ा, फिर भी आपको अपने टेक्स्ट को, अपने इंटरव्यू को यहाँ पे थोड़ा-सा मैनेज अप करने की ज़रूरत है। आपको बताना पड़ेगा, जी मैंने फेयरवेल टू आर्म्स का टेक्स्ट पढ़ रखा है। आप अपनी क्वेश्चन को, आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं कि बट आई रेड द टेक्स्ट व्हेन आई वाज देयर इन माय मास्टर्स, सो इट्स 3 इयर्स अगो, बट आई हैव कंप्लीटेड द टेक्स्ट ऑफ द फेयरवेल टू आर्म्स। और अगर आप फेयरवेल टू आर्म्स का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी आप नॉवल या जो भी राइटर आपका है, उसके ऊपर सिनेमैटिक एडाप्टेशंस को देख लीजिएगा, ठीक है? A Farewell to Arms है, इसी तरह से For Whom the Bell Tolls है, The Old Man and the Sea है, The Sun Also Rises है। So all these names are important whenever we talk about Ernest Hemingway. इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, बाज़-औक़ात जो है वो पूछ लेते हैं कि आपके राइटर जो है, इसके ऊपर इसकी फैमिली का भी कोई इन्फ्लुएंस रहा था? क्या कोई फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम थी? आप जानते हैं, एक बड़ा फेवरेट पोएट है हर एक बंदे का, उसकी फैमिली की वजह से उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहा था।
इनफैक्ट उसकी फैमिली के अंदर एक डिजीज थी जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। आपको उस पोइट का नाम पता है? वो उस पोइट का क्या नाम है जिसकी फैमिली के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था और उसको कोई मर्ज लाहक था, या कीट्स इज देयर। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो आपका फेवरेट राइटर है उसकी फैमिली ट्री क्या आपको बता रही है, उसके पेरेंट्स क्या क्या हैं, सिबलिंग्स क्या हैं, वाइफ्स क्या हैं। जिस तरह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, अमूमन तो हम वाइफ्स जो हैं वो शायद ज्यादातर क्रिश्चियंस के केस में नहीं देखते होते, लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज द वन कि जिसने 4 शादियां की हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखने की जरूरत है कि क्या कोई इसका चिल्ड्रन भी ऐसा है जो इसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है, या कोई ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा है। तो ये वो तमाम के तमाम पैरामीटर्स हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर राइटर को प्रिपेयर करते हैं। सो इन पर्टिकुलर राइटर्स को प्रिपेयर करते हुए आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू किसी भी तरह आपके हाथ से ना निकल सके। लेकिन चीज़ें कुछ यही रहेंगी जब आप किसी पोइट को तैयार करेंगे। ये मैंने नॉवेलिस्ट या ड्रामेटिस्ट के बारे में चीज़ें कुछ बताई। ज़्यादातर चीज़ें यही रहेंगी जब आप किसी भी करेंगे। आप पानी एक गिलास दे दीजिएगा। जब भी आप जो है किसी पोइट को तैयार करेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा या थोड़ा-सा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। अच्छा, वो चीज़ें अब हमारे पास कौन-कौन सी हैं जो हमें पोइट्स को तैयार करते हुए याद रखने की, देखने की ज़रूरत है। पोइट्स को तैयार करते हुए हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें देखने की ज़रूरत है, सबसे पहले अब मिसाल के तौर पर अभी हम कीट्स की बात कर रहे थे, तो जॉन कीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो बड़े फेमस नेम होते हैं ना, इनमें आपको डेट्स भी अगर याद हो जाएँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि 31 अक्टूबर से 1795 तक रहा था, या आपके इंटरव्यू में एक अच्छा एक्सप्रेशन जो है वो जाता है, 23 जो है वो फ़ेब था, और आई थिंक कि वो 1821 जिसमें जो है वो पीबी शैले ने इस पे लिखा भी था इनफैक्ट। ओके, सो हमारे पास जो है, अब जॉन कीट्स एक ट्री से ताल्लुक रखता है और ये हमारे पास है रोमांटिक ट्री जो है वो, और रोमांटिसिज्म में हमारे पास इसका नंबर जो जॉन कीट्स का आता है वो आता है यंगर रोमांटिक्स में। अब जब आपने अपना जो पोइट तैयार करना है, पोइट की तैयार करते हुए आपने ये भी देखना है कि उस एज में और कौन कौन से लोग लिख रहे थे। सो आपको डिफरेंट राइटर्स जो हैं, अगर जिस तरह से रोमांटिक्स हैं, अब जब जॉन कीट्स की बात करेंगे डेफिनेटली हम जो हैं वो पीबी शैले और बायरन की बात भी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पीबी शैले और बायरन का जो है वो आपस में, और कीट्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप था। आप जानते हैं कि बायरन जो है वो वुमेनाइजर था। बायरन बहुत खूबसूरत था, इनफैक्ट ही वाज लॉर्ड एक्चुअली। पीबी शैले भी एक लॉर्ड था, लॉर्ड पर्सी बेसे शैले वाज द कंप्लीट नेम। और जब उसने जो है वो मैरी के साथ शादी की, तो वो भगा के जब उसको लेके गया था तो वो लॉर्ड बायरन के साथ ही लेके गया था। और लॉर्ड बायरन आप जानते हैं कि एक ऐसा नोटोरियस पर्सन होता था जिसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता था, क्योंकि उसको कहा जाता था कि इसके व्यूज बड़े ब्लास्फेमियस किस्म के हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि कीट्स जो है वो बेचारा इन दोनों से मुख्तलिफ था क्योंकि वो किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं था। वो बेचारा तो एक ऐसी फैमिली से था जिसमें सारे के सारे टीबी से मर रहे थे। सो अब हमारे पास जो है, जो कीट्स के ऊपर असर पड़ता है इसकी बीमारी की वजह से, कि उसकी पर्सनालिटी में इंडिफरेंस आ जाता है। अब हमें इसको देखने की जरूरत है कि वो इंडिफरेंस क्यों आ जाता है। अब हमें ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो मूवमेंट 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है वो लॉन्च की थी लिटरेरी बैलेट्स के लिखने के साथ साथ, इस मूवमेंट पे 1898 तक आते आते एक सेंचुरी गुजरने के बाद क्या असर पड़ता है। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को किस तरह से ये प्रोसीड फर्दर करती हैं। नेक्स्ट, जो उस पोएट के साथ स्पेसिफिक चीजें हैं लाइक ऑर्ड्स हैं, तो उनको देख के जाइएगा, ठीक है। कुछ चीजें जरूर याद रखिएगा, अगर आप किसी भी फेवरेट पोएट को ले रहे हैं, उसकी कम से कम पोएम्स का जो टाइटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, in a lot many interviews the question was ode on a nightingale or ode to a nightingale, या ode to a Grecian urn or ode on a Grecian urn. So in case you are going to pronunciate the wrong name, definitely the ball will not remain in your control. ओके जी। अच्छा, जॉन कीट्स जिन्होंने तैयार करना है ना, इसकी क्रिटिसिज्म भी जो है वो पढ़िएगा, जिसमें ये नेगेटिव कैपेबिलिटी और बाकी चीजें लिखता है।
इसके लेटर्स जो हैं वो पढ़ के जाइएगा, जो इसने अपने भाई के नाम पे लिखे थे। और कुछ लेटर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लेटर थे, फैनी के नाम से लिखे थे, लेकिन इसने फैनी से कहा था कि इनको जला देना, ठीक है, और फैनी ने इसकी बात मान ली थी। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी ये देखने के बाद इसके मेजर वर्क्स क्या हैं, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन कीट्स जो हैं, कीट्स के लिए मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कीट्स को लेंगे। 1848 से लेके 1878 तक, जो कि कीट्स तो चला गया 1821 में, लेकिन 1878 तक जो ज्यादातर क्रिटिक्स हैं जिस चीज के ऊपर गौर किया, काम किया, वो इसके लेटर्स थे। और इसके लेटर्स के ऊपर जितना काम हुआ वो आपको पढ़ने की जरूरत है। टी.एस. इलियट जैसे राइटर्स जो हैं उन्होंने भी इसके लेटर्स को देखा और उनके ऊपर कुछ काम किया, वो भी जरूर देखिएगा कि कीट्स के लेटर्स जो हैं उनके ऊपर किस किस डायमेंशन में काम किया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जॉन कीट्स हो या कोई भी पोइट हो, आपने इसकी पोएम्स की कुछ लाइनें जरूर याद कर दी हैं। ऐसा शायद ही कोई इंटरव्यू गुजरा हो कि जिसमें आप जो हैं, आपको आपके फेवरेट राइटर की कुछ लाइनें, कुछ पोएम्स की लाइनें जो हैं वो ना रिसाइट करने को कहा गया हो। I still remember when I was there in my interview, I was asked to talk about the W.B. Yeats poem, The Second Coming, and like turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falcon, or things fall apart, the center cannot hold, made anarchies loosed upon the word, the blood dimmed tide is loosed and everywhere. So you're supposed to memorize some lines. In case you're going in your interview without memorizing even a single word, you're not going to make your place there. There is no room for you in the interview. ओके, सो यहाँ तक मैंने इसलिए 20 मिनट्स की बात की कि हम जो हैं वो देख लें कि क्या ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फेवरेट राइटर तैयार हो। तो क्या इसी तरह से आपने तैयार किया हुआ है, जो 10 लोग जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी और बाकी सब जो हैं, क्या इसी तरह से तैयार है आपका? आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया? A little bit. Okay, no worries. अच्छा, अभी जो है ना, ये जो अभी हम सेशन प्रोसीड फर्दर करने जा रहे हैं, ये हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो करने जा रहे हैं, जो हम फातिमा, इर्तिका, ये सब लोग जो हैं इनसे मेंशन किया है, तो आप अपना फेवरेट राइटर, फेवरेट जॉनरा बताएंगे कि मैंने रोमांटिसिज्म मेरा फेवरेट जो है वो सेक्शन है, फेवरेट जॉनरा है, पोइट्री मेरा फेवरेट जॉनरा है, और ये जो है वो हमारे पास जो है वो रोमांटिसिज्म है, राइटर मेरे पास जो है वो वर्ड्सवर्थ है। तो फिर जो है आपसे उसके ऊपर बात होगी और ये इवेल्युएट करने की कोशिश की जाएगी कि क्या आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या आपको इसको चेंज करने पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जो हैं पहले हमारे पास क्या मिस फातिमा हैं, वो अपना नेम या यस चैट बॉक्स में लिख दें ताकि उनको हम अनम्यूट कर सकें। नोबडी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस आपसे, ये जो है वो सिर्फ एक डिस्कशन मोड होगा। सो आपको वरीड नहीं हो जाना कि पता नहीं मुझसे क्या पूछा जाएगा और मुझे अपना माइक जो है वो बंद ही रहे तो अच्छा है। ओके, फातिमा इज नॉट देयर। इर्तिका इज द सेकंड पार्टिसिपेंट। इर्तिका is requested to write yes in the chat box ताकि हम उन्हें ले सकें on board. Shari, Irtika is not there. Ishfaq is with us. Ishfaq sab is there. The chat box is in front of me, so I don't know from the participants. Okay. Okay, Ishfaq sab जो हैं, आपका mic Ishfaq मैं open कर रहा हूँ. You are requested to unmute yourself. Hello sir, Assalamualaikum. Walaikum assalam, Ishfaq. Good evening. How are you? Alhamdulillah, all right. Okay, so gentlemen, would you like to share your favorite writer, genre, and all the other details that you have prepared so far for your interview? So, before that discussion that you have delivered today, I many concepts that I didn't know that which writer should I go. So previously I was going for T.S. Eliot. The sole reason was that I had thesis on his work, The Wasteland. So I worked on his work to find out
the use of figurative language in T.S. Eliot's Wasteland. So I had that thesis and I worked on that thesis for 2 or 3 months. So I was Okay. about to go for that, but you have shared lot many things, and these things would definitely help me to go for Hemingway. And I also worked, I read Hemingway as well. So what I think after just assessing all these things and points, because I am trying to make notes of your lecture, so I just try to write the things that you tell us. So I would like to go for your suggestion that whether I should go for its Westland, because I worked on only one poem. We know that you are critic, you are the literary giant of 20th century. So other than that, as you have mentioned Hemingway, so I have downloaded his 4 movies. And Very good. one of his work as a Farewell to Arms, that was part of a syllabus. So I know the storyline of that, and I also worked a bit on his style because he was famous for his style. And for that, he won Nobel Prize. Okay, fine. Things that you mentioned. Now, I would like to ask for your guidance and the final choice that I'm in dilemma with, because I also have some sort of knowledge on poetry as well. I think I would do better when if I go for Hemingway. Okay, well, thank you so much, Ishfaq, for sharing a detailed analysis. Yes, ultimately, you are the only person who can control the drive, because in your interview, you are supposed to handle your writer. Talking about Thomas Stearns Eliot, like T.S. Eliot, is not an easy thing, because T.S. Eliot was not merely a poet, a literary critic, but he was also a publisher, playwright, and a lot many other things. The thing that I am talking about, why T.S. Eliot is considered difficult to handle, is because he and Ezra Pound, they are considered that they are the founder of the modernism. Okay, and modernism is the movement that is a lot different than other movements in a lot many ways. Okay, so T.S. Eliot, if you are going for T.S. Eliot, you need to understand a lot many things about T.S. Eliot, including his early life and where he been, his complicated life, like, and what is the relationship between his complications and the writings that in Wasteland, if he is talking about that this century, this age, this era where we are living, this is the worst age. So he is selling something that is a medievalism in the, under the wrapper of modernism. Talking about his poetry, so T.S. Eliot's poetry, as compared to the other writers, it is a bit difficult to handle. You have mentioned the Wasteland. I would like to talk about the love songs of J. Alfred Prufrock. Remember in 1915, because he was a very close friend of Ezra Pound, and he was taking dictations from Ezra Pound. So, and they were, Ezra Pound and T.S. Eliot, they used to sit with Harriet Monroe. Harriet Monroe, who was the founder of the magazines. Okay, so the love songs of J. Alfred Prufrock, the very beginning lines, they are giving us the detailed insight, like whatever is going on in the mind of T.S. Eliot. So T.S. Eliot is the person who's using maximum symbols. T.S. Eliot is the person who has highlighted a lot many things in the love songs of J. Alfred Prufrock, then the Wasteland. And in Wasteland, we can see whatever he's trying to depict, that is completely different. Like the very title, the Wasteland, the land we are living, it is a completely, wastage. So the heaven is no more here. We are living in the hell. Like God is not interested in this world. Then the Hollow Man and all other poems. So yes, it is a very wonderful idea that you are going to change your minds, because not only the poetry, you need to handle the plays of T.S. Eliot as well. So T.S. Eliot was not merely a poet, he has written some plays as well. So you need to go for those plays as well. Yeah, yeah, definitely. So then after that, you are supposed to prepare the criticism, literary criticism. Okay, and his contributions are considered very significant. Okay,
In fact, a lot many people, they think that his criticism influenced the school of new criticism. Okay, William Ampson and the other writers, they are their followers. So they are following some lines of T.S. Eliot. And then after all, his important critical essay, that is the tradition and individual talent. So all these things indicate that it is really difficult to handle T.S. Eliot, because as I mentioned earlier on our previous screen, okay, the point number 11, influence and the legacy. So if you have read T.S. Eliot, he was following a lot many poets and the novelists, like Ezra Pound was there, Harriet was there, William Giddens was there. So a lot many names are there. So it's not possible for a single mind to handle 20 to 30 names of the poets and all these things. So yes, it is a wonderful thing that if if you're planning to go for a change, and then you need to handle the Nobel Prize that he won in 1948, like why he was awarded the Nobel Prize, and then the academic awards and the other honors. So I think that it's not a wise idea, but you have already mentioned that you are going to change it. So good luck with that. In case you have any question, you may ask your questions, Ishfaq. Okay, sir. Thank you. You have clarified my mind. And, it is better for me to go. Yeah. And what is the name of the favorite poet? Your favorite poet? In case they are going to ask the name of your poet. I think we have to prepare a novelist and a poet. So in poet, I would definitely go for Keats, because I was inspired by his quotes. And, after the inspiration, I also wrote one of the odes. Oh, so I am sure that your participants, the fellow participants, would love to read your ode. So do share that ode in your group. Yes, I would definitely. I would. Okay, thank you so much. Thank you so much, Ishfaq. Good luck with that. The next participant is Imran. Imran Heather, if you're there, please do mention yes in the chat box. Okay, you're there. I have unmuted you, Imran Heather. Assalamu alaikum and good evening, sir. Walaikum assalam. Thank you so much, Imran. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? Thank you so much, gentleman. I'm good, alhamdulillah. So, favorite poet and novelist or the dramatic sir, writer? I have a question. First you have to answer it, then I'll move forward. That sir, yes, sir. Sir, we have. I have a question that should we have only one writer, or we have to prepare a single writer, or your favorite writer from each and every genre? Imran, I'm sure the screen is there. I'm writing something. There are two sort of situations. The first situation is the ideal situation. Okay. This situation says, in case you are going for your interview, you need to prepare from every age. Okay. From every age, from Old English, from Middle English, from Renaissance, from Jacobean age, from Victorian age, from every age, you need to prepare 3 writers as your favorite fan. That is the ideal situation. Okay. You are supposed to prepare one poet, one dramatist, one novelist from every age. That is the ideal situation. But what is the second situation? That is not an ideal situation, but definitely, because participants, they are not, what is the most appropriate term for that? But with apologizes to all of you, they are not able to complete all writers from all the ages. So the second situation is suggested here. That means they're requested to prepare any single name from the novelist. From if they are preparing the novelist, any single name will be more than enough for that. Any single dramatist, and then any single poet. So it is the second situation. But the ideal situation is still there. If anybody is following the first, that is the ideal situation. Yes, that is the recommended one. Okay, sir, but we have to play on our safe hands. So I was thinking so. Sir, my favorite writer, most of I have prepared. I have just outlined
a single writer from each genre. In poetry, I am going with John Keats because his sensuousness and his depiction of sceneries in his odes, it's marvelous. And in drama, I'm going with Henrik Ibsen because Ibsen is some critics have said that he is a social reformer as well and the father of feminism in modern drama. And Okay. then in novelist, I need your suggestion that should I go with George Orwell or with E.M. Foster? George Orwell is famous for Animal Farm and, you know, Yes, 1984. yes, Uh, sir. though that is very interesting person, the personality of George Orwell is very interesting. But once Yes. again, what, you know, what is the voice of your heart? What is the inner voice? You should go for that. Sir, it's George Orwell because I have in-depth not in-depth study, but I have keen interest in Marxism and anti-Marxism. So I think that I can defend this novel. It was not included in our syllabus, but it's my interest. And in Okay, there's prose, no need to worry about. Yeah. I'm going to listen the complete yes, answer as well. You have mentioned that you have selected John Keats because of his sensuousness. What yes, is sir. the definition of sensuousness, gentlemen? Sir, sensuousness means that uh, anything that is Mm-hmm. written, it is appealing to our senses. That when it is being described, when it is being depicted, then it's directly appealing our senses. For example, in his Ode on Greshner, he Hmm. has depicted the carvings that he has seen No, no, on. no, no, no. Just mention the exact lines. You mention the exact lines from the poetry of John Keats, where you are Exact feeling that he has been lines. the yeah. Sir, I have remembered, but right now I am unable to recall. So I'm Mm-hmm. sorry. I With beaded memorized. bubbles at the berm and purple stained mount, maybe I cannot see what flowers Yes, are at my feet, nor what yes, sir. soft All to a and nightingale. All to a nightingale. mhm, Yes, yes, sir. the coming musk. So you need to memorize the lines, okay? Yeah, sir. Second thing is that Yes, mm-hmm. sir. I did, but unfortunately, I am unable to recall. Okay, okay, Yes. all right. Okay, then the second thing is Henrik Ibsen. Why Yes. Henrik Ibsen? Once again, why not other writers? Why Sir, Henrik Ibsen? okay, yes, sir. Sir, there was distortion, so please Hmm. repeat it, sir. Okay, why Henrik Ibsen? Why Henrik Ibsen? Why Henrik Sir, Ibsen? Henry Gibson, because I have choose it because it appeals to me. In literary criticism, sorry, in literary modern literary theory, I was Mm-hmm. good at explaining feminism. So I think that, and moreover, we have read his novel, play, A Doll's House, and and we Mm-hmm. read with explanation as well, and with in-depth study, we may say, sir. So So I think that how many critics you have read on feminism? How many sir, critics you have read on Henrik Ibsen's plays? Like they have mentioned their criticism, and after that you selected Henrik Ibsen because if you are going for Henrik Ibsen and you're talking about feminism, definitely yes, you are done with the criticism because Henrik Ibsen explicitly identified himself as a feminist. Okay. And yes, even if we listen some of his speeches and those people who've been in contact with him, he never ever mentioned that he is there for the feminism. So, like, why do you feel that he was a feminist? And is there any critic that you have covered? sir. In feminism general, we have read about the second sex of Simon de Beauvoir, and uh, Mhm. on Henry Gibson, I have just read about Virginia Woolf when he says that a room is for him and a writing table is a writing table for him. So I think it's for realism. Sorry, sir. That Okay, so writing how table is. many you have mentioned a very, very great name of French philosopher Simon de Beauvoir.
So how many Yes. books of Simon de Beauvoir you have read so far? Like you have Only read this only one, sir. okay. The second And sex. what is the second sex? Yeah, if I'm not wrong, published somewhere in 1949 or 1950, quite close to George Orwell's novel 1984. So Yes. yes. So what do you feel कि वो तो ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन पे जब बात करती है प्रेजेंट सोसाइटी पे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से बात करती है लाइक Yes, उसने जो ये I किताब भी told, जब देखी थी sir, I told that on feminism. Generally, I have read this book. I am not हम्म, generalizing it with Henry Gibson's work. I'm not हम्म, relating with Henry Gibson. Okay, fair enough. Gentlemen, I have some suggestions for you. Enough with the Okay, sir. John Keats. You should go for John Keats. Fine, Okay, but you need to memorize the very basic details like some lines. And if you're not able to, recite some verses from John Keats, maybe there is not sir, I a have a favorable question. condition. I'm Sir, definitely I going have to a answer, question. but I want to mention somewhere here. I will recommend you to go Simon de Beauvoir's other books like The Woman Destroyed. If you are going for Henrik Ibsen in that way, The Woman Destroyed is going to give you the deep insight, like what we mean by feminism, and you need to read Okay, out sir. the details of the feminism and the waves of the feminism and what is the current wave of feminism that is here in Pakistan. Okay. Okay, sir. Okay, So sir. no, no, I'm expecting your questions. Please go on and ask the question that you have. Sir, we say that John Keats is an escapist, that he Mhm. wants to disappear from the present world. And in Ode to Nightingale, he says that uh, unheard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. And he wants to tell us that our fancy is much more sweeter than imagination. Sorry, our fancy is much more sweeter than our Mhm. reality, imagination. Then Mhm. why he says that fancy can never cheat you? Mhm. Well, Isn't it, gentlemen, sir, is before. it justifiable Mhm. that on Well, one end we are saying that Keats is an escapist, and on the other hand he is in his odes, in his poetry, he's telling that he is not. Sir, I have perceived such. So please, sir, clarify it. what I had a I question, sir. perceived, what I perceived from your question is, please do correct me if I'm wrong. You're talking about escapism, and you're saying that escapism is something that is generally associated with John Keats. Fair enough. Yes, sir. Well, Yes, sir. yes. My point is, I'm going to take the first side of your question that he was an escapist or not. Yes, he was. The thing is that if we talk about the age of John Keats, he was born in 1795, just Yes, after sir. some years of French Revolution. So, in the Of age of course. John Keats, the revolutionary ideas were going on. Okay, so it's Yes, not sir. possible for any writer to keep himself away from it. Keats is a pure poet, and poetry of Yes. Keats is beyond morality. So, talking about your answer now, the Yes. lines that Keats wrote directly hit the senses. Okay, his poems are Okay, sir. entirely based on imagination, gentlemen. Poetry for the sake of poetry is the agenda of John Keats. And if you Yes. read the Ode of John Keats, every ode of John Keats is mentioning that he is an escapist because Yes. he is always trying to find, he's creating a way, he's finding a way of creating fancy world so that he may Yes. forget worries of his life. Okay, he is Yes. trying to forget the worriness, the tiredness, the fatigue of his life, and that is the reason he is finding a way of creating fancy words. Okay, so Okay, sir. poetry of escapism is associated to John Keats, and the thing is that he is an escapist. The very reason is that because he is thinking that the world where we are living, where you and me are living, it's a brutal one. Yes. Okay, so in case we Yes. want to seek the inner sides, like he has mentioned in his Ode to Nightingale. So the Yes. poetry of escapism is like he is in search of the world where he can go for peace. Okay, so you Sir, need sorry to to prepare some. Yeah, please go on. sorry, sir. He says that I'll come to the not by charioted Bacchus and by his parts, but I will fly to the on the wings of poesy, viewless wings of poesy.
Sir, in first lines, these are ending lines. I think are the middle lines of these Ode to Nightingale. And he says he is escaping from the physical world. But in his last couplet of this poem, very poem, he says that fancy cannot cheat you. So, sir, I am understanding that we have to stick on the idea that he is an escapist. But this thing is just startling for me. Well, gentlemen, you're talking about the last sentence of Ode to Nightingale. Okay, if Yes, I'm able to yes, recall the exact lines, that is, instead of wine, he's talking about fly on the yes, sir. wings of his. Okay, the Yes, thing sir. is that we understand the John Keats, what is the theme here? Okay, Yes, if I'm not wrong, away, away, for I will fly to thee, yes, not charioted by Bacchus and his parts. So he is thinking how the depressing world is actually. Okay, he wants to get out of yes. this world. He want to join the nightingale in its refuge from the world. Okay, so this is something that I have perceived from your questions. John Keats is escaping from the situation. Sir, He is I am going in satisfied. another. Sir, I am Mhm. satisfied with your answer, sir. Thank you, sir. You're welcome. You're welcome. Sajad's question is negative capability. Sajad, when Yes. you are going to negate yourself from the very person, like if you have written a poetry, a poem, and you are going to negate yourself, जॉन कीट्स इज हैविंग दिस व्यू कि अगर आपने एक राइटर हो और आपने कुछ लिखा है, अपने आप को उसके अंदर से निकाल लो, अपनी पर्सनालिटी को निगेट करो. एक राइटर जब लिखता है तो उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने आप को उस काम में से निकाल ले. जैसे जब हम विलियम शेक्सपियर की वो मिसाल देता है, तो विलियम शेक्सपियर जब लिखता है तो वो अनसर्टेनिटीज को, मिस्ट्रीज को, डाउट्स को लिखता है. और जब वो डेस्डिमोना लिखता है तो हमें लगता है कि हम डेस्डिमोना को पढ़ रहे हैं, वो डेस्डिमोना एक अलग सा कैरेक्टर है. जब हम ओथेलो को देखते हैं हमें लगता है कि वो बिल्कुल एक अलग सा कैरेक्टर है. सो जिसमें राइटर अपने आप को निगेट कर लेता है, ये उस राइटर की वो सलाहियत होती है. ठीक है सज्जाद, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन? Sir, if सज्जाद के इमरान, आप की चूंकि टर्न ओवर हो गई थी, आपका मैंने माइक जो है वो बंद कर दिया हुआ था. अगर कोई दोबारा से क्वेश्चन है तो हम दोबारा से आपका माइक ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा था गुलाम मुस्तफ़ा साहब से, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इट्स 5:47. तो अगर आप अपना क्वेश्चन लिख सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा. हम गुलाम मुस्तफ़ा साहब को भी सुन लेंगे. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 6 मोर पार्टिसिपेंट्स एंड द टाइम इज रियली शॉर्ट. तो हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन शायद एंटरटेन कर नहीं पाएंगे. ओके, गुलाम मुस्तफ़ा, यू आर रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, गुलाम मुस्तफ़ा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Perfectly fine, sir. So I'm sure that you are enjoying the conversation and you are learning a lot many new things. Yes, sir. It was wonderful conversation, and I was Okay. thinking that I am very low learner and I didn't know anything about all these things. No. There is no need to worry about गुलाम मुस्तफ़ा. There is no need to worry about. हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी स्टेप पे लर्नर ही होते हैं, लेकिन हमें बस एक स्टेप मिल जाता है जिस पे मेहनत करनी होती है और हम मेहनत करते हैं. So what is the name of your favorite writer that you have prepared for your interview? Christopher Marlowe, sir. Very good. He's एक my अच्छा ऑप्शन है. favorite writer. Right, sir. So why Christopher Marlowe? Why you have chosen Christopher Marlowe? Sir, personally, I believe that he is very ambitious person, and a person who wants to gain something, he must be ambitious. I want to quote his lines. All things that move between the quiet poles shall be at my command. Emperors and kings are but obey in their provinces, nor can raise the wind or rend the cloud. That is the Very reason good. I want. Okay. Ghulam Mustafa, how many plays of Christopher Marlowe you have read so far? How many dramas, how many tragedies of William Shakespeare? I have read the Christopher Marlowe only two plays, Jew of Malta and Dr. Faustus. And I have read the summary of Edward II also. Okay, fair Yes, sir. enough.
So how many quotations you have prepared from Christopher Marlowe's these three plays? Edward II, that was published in 1592, The Jew of Malta 1589, and Dr. Faustus 1588. I'm sure that you know, in case they're going to ask you, what is the name of his first tragedy, second tragedy, and third tragedy? You know, like what is the date of the first publication, second and third. So I was asking how many quotations you have prepared from these three tragedies that you have mentioned. Sir, I have prepared two quotation from the Dr. Faustus. One I have already mentioned, and second is this: the was there the face. Sorry, was this the face that launched the 1,000 ships and burned the topless of the world? This Okay. and from Jew of Malta. Uh, Okay, I okay, fair just enough. want to recall it. Account religion, but a childish tie and told us something about that, like Okay, vocabulary very good. kind of told. Gentlemen, I am going to recommend you something. Go for the readings, go for the summary of the remaining plays as well, like Dido, that is the Queen of Carthage, then the Tamburlaine, then the Massacre at Paris. Okay, go for the summary of Yes, sir. these three plays. In case you find difficulty anywhere, in case you are unable to understand any idea, you may inbox me your questions. Second thing is, like Christopher Marlowe worked on the translation as well. Okay, so you need to understand some of the translations. If not more than two, then the two translations are very important. That is very important. I am mentioning the name here Yes, for sir. your convenience. Hero and Linger. Okay, by the way, it was published unfinished was because he could not complete it, but still he started it in 1500 and I think after 90, I don't know the exact year, but it's a very famous one. And the second one is the Passionate Yes, sir. Shepherd. It was. Okay. I think it was. Yes, sir. Yes, sir. Hero and Lander Mhm. was. I think, sir, it was completed by Chapman, if I'm Oh not wrong. yes, George Champion. Okay. Yes, sir. Yes. So the second is the Passionate Shepherd. Okay, so you are supposed to read these two translation, and overall the work on Christopher Marlowe, you need to read some details like how he was going in competition with William Shakespeare. So what was going on in England, in London at that time. So these details should be there on your fingertips. But when you're going to talk about, oh, I think. So when you're going to talk about Christopher Marlowe, they're going to ask you some basic questions about William Shakespeare. So you should not ignore the basic questions like no Marlowe, no Shakespeare, these sort of questions. Okay. What was the Yes, name sir. of the company for which Christopher Marlowe was working, and what was the name of the company for which William Shakespeare was working? So why Yes, this Christopher Marlowe was killed, and killed by whom, and in which year, and what were the blasphemous charges, and all these things should be on your fingertip. Okay. And what is the name of your favorite poet, Ghulam Mustafa? sir. I'm a little confused between Carnage and Keats. Okay. If you are confused between Coleridge and Keats, remember Coleridge was a critic. Okay. Yes. And Yes. and the second is first is Coleridge, and the second person you are confused between two names. Keats. 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 John Keats. Okay. Yes. Yeah, once again, the redundancy is there. Every person is going for John Keats. Uh, don't you love Shelley? So haven't you read Lord Byron? Why Keats? In case the panel they are not interested in John Keats now, Yes, sir. they will definitely ask you to choose another poet. Okay, Sir, just can I go mhm. for a done? Done. Done. Yeah, John you Donne. can go for John Donne, or you can also prepare Thomas Hardy's poetry. Okay, though there is not very Yes. famous one, but you can prepare Thomas Hardy. John Donne is good option, but once again you will have to handle it carefully. But at least John Donne is Right. you can A, the person A should be John Keats,
If they're going to Right. ask you the questions from John Fields, fair enough. Otherwise, go for Right. John Donne. Okay, you should prepare 2 poets. Okay, so wishing Okay, you sir. good luck, Ghulam Mustafa. Thank you, sir. Okay, Ji. The next name we have is Malik Fahim. Malik Fahim, you're requested to okay, let me unmute you. Malik Fahim is there. Malik Fahim, sir, welcome to the session. Good evening. You're requested to unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. Sir, good evening. Walaikum Assalam. Thank you so much, Malik Fahim, sir. So, Fahim, I'm sure that you're done with the selection of your favorite writer, Yes, sir, yes. poet, novelist, dramatist. So, what is the name? So, sir, I have chosen drama as my favorite genre, and favorite dramatist I have chosen Christopher Marlowe. Very good. So, And, how many I plays have, of Marlowe you have covered so far? sir, I have been covered 4 plays. I have depth detail about Jew of Malta and Dr. Faustus and Tamburlaine the Great, and I have prepared the as well summary of the Edward II, and still Okay. I have to do 2 more Dido the Queen and the Massacre of Paris. Okay, and what is the name of your favorite poet? Sir, favorite poet is Philip Larkin, postmodern poet, and yes, I've chosen. Okay, Philip Larkin, a very Yes. interesting name, by the way. What was the nationality of Philip Larkin, Fahim? Sir, he was British. He was British, and Okay. he is most famous for his 4 poetry collections. And he was famous due to his themes, which he has used in his poetry. Like he was anti-war, he was a realist actually, and he has written most of the poetry after the Second World War, and we can see the impact of Second World War in his poetry. And he was a part of the movement, which was a poetic movement. And so, Fahim, have you read the novel of Philip Larkin, Trouble at Willow Gables? What, sir? Have you read the novel? Sir, he has written 2 novels. No, sir, I have no idea about his novel. And he has written a lot of poetry. 4 volumes of the poetry, a lot of poetry. But I am just going through and covering his main poems, which are very famous. Very and good. which are Go for that. Yes. Go for that, Fahim. My recommendations are please complete his very famous novel. Although you're taking him as a poet, the panel is going to ask you the questions from The Trouble at the Willow Gables. That is a very famous novel. And the second novel is, I'm sure that you have read the Term at St. Brides. I have not read that novel, so I don't know the exact name, but that's a very famous novel. So, what is the name of the first novel? Would you tell me? Sure, Trouble at Willow Gables. Let me write the name here. Willow Gable. I'm mentioning the name in front of you. Okay, that is a novel basically. Okay, So okay, sir. Okay. You need to give it a reading and do not forget to explore the details about the origin of the drama, okay, and all basic questions, because whenever you talk about drama, they're going to ask you the question, why drama, why not novel, why not poetry, and then the drama origin and all. Sir, actually, I have listened the videos which are shared by you about the history of the drama and the development of the drama from the church to Renaissance and then forward. So I'm sure your concepts are clear by now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. And my favorite novelist is Thomas Hardy. Very good, a very good Thomas Hardy, and the role of fate. I'm sure that you have prepared all the things. Yes, his philosophy is more important, and I have covered his 3 to 4 novels, because which are mostly taught in the Punjab University and Sargodha in the famous university. Yeah.
Okay, thank you so much, Malik Fahim. I am satisfied with the personalities that you have taken, that you have chosen for your interview. Participants Yes. from Inshallah tomorrow will request Ghulam Samdani, Nazish Guleria, Miss Sana, and Sir Zahid that, yeah, we have a question. Yeah, what are your suggestions, Imran? What your question like? I'm sorry, I forgot your question. I'm going to unmute you once again so that you may proceed further with your question. Imran, you're requested to unmute yourself because we have a few seconds there. So please go on and complete your Sir, question. sir, my question is that, sir, please recommend me or testify that about the writers which I have chosen. Yeah, I have already recommended you. That's wonderful. Here is your seat. Okay. So Yes. I think that I have removed your sheet. I have mentioned already accordingly. The details I mentioned while I was, asking the questions, I was mentioning all the things that what you should do and what you should not do. So John Keats is wonderful and you are going in details and you are exploring a lot many dimensions. That's wonderful. I think I have recommended you the French philosopher and the books as well. Okay. So from my side, I'm sure that I have given you enough recommendations, but in case you are feeling there's any question that has been unanswered or you want to go for escalation, you are requested to please ask the question. Sir, I had a question which I wrote. It was that did Keats use egotistical sublime for Wordsworth? Mhm. First of all, you need to understand what is egotistical sublime. Okay, Sir, so what is yes. egotistical sublime? Sir, which I have perceived, it is that it is quite opposite to negative capability. Egotistical sublime means that you are indulging your feelings in your very characters or in your very work which are you are writing. Well, you need to go further for the details. The Okay. egotistical sublime, when it was coined, and I also have mentioned earlier, when you're preparing John Keats, you need to remember his majority, the negative capability, and other Yes, sir. terms have been taken from the letters. Okay, actually, it Yes, sir. happened like in 1818. He wrote a letter to the Richard Woodhouse, and from there we have egotistical sublime. And yes, he has used this term for William Wordsworth. And the very thing is that Wordsworth is, whenever he is talking about nature and all the things, he is self-centered. He is talking Yes, about sir. his own self time and again. Okay, so yes, Yes. the answer of your question is yes, he has used Okay, sir. egotistical Thank you very sublime much, for. sir. You are welcome. You're welcome. So, Okay. participant, the last thing is that I was mentioning before answering the question of Mr. Imran. The rest of the participant will take them on board tomorrow, inshallah. Till then, all of you are requested to take care of yourself and have a good evening. Khuda Hafiz.